Good morning, everyone. So, we have already left with the part that is global warming. Okay, so warming, you all know, जो भी heat होती है हमारी, right? The greenhouse in the atmosphere trap the heat of the sun. So, as I told you, the greenhouse gases कौन सी होती थी हमारी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीछे हमने पढ़ा था. ये greenhouse gases होती हैं that trap the heat of the sun, and there is a rise in the temperature on the earth. This is called the global warming. In the last 100 years, the average temperature of the earth has given by 1 Fahrenheit, and in the next century, it is rise about 2 to 6 Fahrenheit. This change in the climate is worse. As you can see, कितने टाइम से इंक्रीज हो गया. सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो भी हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो इतने ज़्यादा ठंडे एरियाज़ होते थे, ग्लेशियर्स वगैरह, melting of the polar ice caps, rise in the water level of the ocean, and flooding of places near the seas. Efforts need to be made to reduce the warming up process. For each country, especially the ones which release more greenhouse gases, should reduce them. That is the only way to prevent a major disaster. यही एक तरीका है हमें इससे बचाने का. Each of us can do our bit by using electricity carefully. जो भी हमारे यूजेस है रिसोर्सेज, उनको हम बचा कर कैसा कर सकते हैं. यूजिंग मास ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस और द मेट्रो, growing more trees, and using recycled products. Many countries have signed assignment aimed at reducing greenhouse gases. On one such agreement is the Kyoto Protocol. Okay, so now agreement के name पे मत जाना. It's very simple. What we have to do is we have to take care of our environment as well, right? Now what is pollution? पता है सभी को. जो भी स्पॉइल होती है लैंड, एयर, वाटर, इसको हम पॉल्यूशन कहते हैं. स्मोक फ्रॉम द व्हीकल, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस fouls the air. Garbage from the houses thrown in the open pollutes land and air and causes diseases. Spilling of the oil or petroleum and dumping of the chemical waste from factories into the rivers and seas harm the water, plants, and animals. When nuclear power stations produce electricity, harmful poisonous waste mixes with the air. Now, there are the steps of controlling the pollution. Local bodies like panchayats, municipality, and corporation will make realize that pollution can be reduced. So there are the ways we can control the pollution. Like factories are located in area away from the land where we live. Tall chimneys fitted with the filters जिससे smoke कम produce हो. Waste is treated and made harmless. गार्बेज को हमें अच्छे से थ्रो करना चाहिए. प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए. जैसे हमने देखा ना, आगरा येलोइश कलर का होता जा रहा है, ताजमहल उसका. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो भी पोल्यूटेंट है वो हमारे एयर में मिक्स हो के रेन में वैसे ही आते हैं बारिश के साथ. उसकी रिएक्शन की वजह से वो थोड़ा सा कलर येलोइश हो रहा है. तो हमें ये सब सही करने के लिए ट्रीज़ करने चाहिए, प्लांट, सो दैट एयर कुड बी क्लीन. ताजमहल monuments like the Red Fort are periodically renovated by Archaeologists Survey of India. Now, steps क्या हैं? जैसे रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए. This is done to reduce the accumulation of waste like metal, paper, rubber, etc. रीयूज़, जैसे हम रबर टायर्स को भी कट करके शेप करके काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह, बीड्स बनाने में. ओल्ड ट्रक टायर्स आर रिसाइकिल टू मेक द प्ले ग्राउंड के सरफेस बना सकते हैं उससे आप. Metals object thrown away by the people can be reused. People buy pipes, rods, gates, scraps, steelers for use as they are cheaper. Craftsmen buy melt pieces of scrap to make the frame decorations. Every new car has some recycled part of an old car. Empty aluminum cans are cleaned, melted, and reshaped for the cans for use. So like that we can save our environment. Okay, so उसमें कुछ चैप्टर में ऐसा नहीं था, जो नहीं समझ में आ गया. Still, if you have any doubt, you can ask me up tomorrow. I will be adding up the exercises. By completing it, you can just submit me the notebooks on Monday, right after completing both the chapters. That's all for today. Thank you.